अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को ड्रा किया गया कितने कार्ड्स में से? 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। इसमें पहला पार्ट यही है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर। सबसे पहले जानते हैं इन 52 कार्ड्स में से कौन से टाइप के कार्ड्स होते हैं। देखो 52 कार्ड्स में से 26 रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर की होती है। इन 26 को फर्दर डिवाइड हम करते हैं दो हिस्सों में। एक तो इसमें 13 कार्ड्स होती हैं, उनको बोला जाता है हार्ट के, और 13 कार्ड्स होती है डायमंड की। कितने? डायमंड की। और इन ब्लैक कार्ड्स को भी डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, इनको सूट बोला जाता है। और इनमें स्पेड और क्लब होते हैं। और हर एक हार्ट में 13 कार्ड्स अपनी होती है, और इस डायमंड में अपनी 13 कार्ड्स होती है, स्पेड में अपनी 13 कार्ड्स होती है, और क्लब में अपनी 13 कार्ड्स होती है। अब इन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रा किया गया रैंडमली। क्या किया गया? रैंडमली, यानी कि वेल शफल्ड पैक में से ड्रा किया गया। हमें बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो कार्ड हमने ड्रा किया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड होगा किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो है 52। कितने हैं? जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो है 52। अब मैंने क्या किया, पहला पार्ट करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। मैंने क्या किया, मैंने लेट ई डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। मैंने ई से डिनोट किया इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। आप देखो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई दैट इक्वल टू 2। आप देखो यहाँ पे दो ही टाइप के रेड कार्ड्स है, यानी कि दो ही सूट्स है जो कि रेड कार्ड, एक तो हार्ट और दूसरे डायमंड। अब जब मैं देख रहा हूँ इन 13 कार्ड्स में, इस हार्ट में मैं कितने किंग है? एक ही किंग है। और जब मैं देख रहा हूँ इस डायमंड में कितने किंग है? एक। अब टोटल कितने रेड कार्ड से जो कि किंग होंगे? वो दो ही है। दैट इज वाई हियर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इक्वल्स टू 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई divided by total number of possible outcomes. That means here 2 divided by 52, that equals to 1 by 26. That equals to 1 by 26. And in second part you have to find the probability of getting a face card. Getting a face card. When you look here, इनको बोला जाता है फेस कार्ड। एक तो जैक को, और दूसरा किंग को, और तीसरा क्वीन को। इनको बोला जाता है फेस कार्ड। क्या बोला जाता है? फेस कार्ड। अब इसमें भी जैक, किंग और क्वीन, दिस इज फेस कार्ड। दिस इज फेस कार्ड। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा लेट एफ डिनोटिस द इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। मैंने क्या लिखा? एफ डिनोट कर रहा है इवेंट को गेटिंग ए फेस कार्ड। गेटिंग ए फेस कार्ड। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ। व्हेन यू लुक हियर in this heart, how many face cards are there? In heart there are 3 face cards, and in diamond there are also 3 face cards, and in spade there are also 3 face cards, and in club there are also 3 face cards, which means that total number of face cards equal to what? 12. They are 12 in number. When you look at here, total number of face cards equals to 12. As you know that I denoted here, this F denotes what? This F denotes the event of getting a face card. Number of outcomes favorable to this F, that is 12. That is number of face cards, that is 12. Now probability of F, that means probability of getting a face card equal to 12 divided by 52. That equals to 12 divided by 52 equals to 3 divided by 13. This is the required probability. This is the required probability. Third part,
In third part, you have to calculate, find the probability of getting a red face card. Getting a red face card. Look here. First of all, in third part, denote the event. This is third part of this question. Third part. You have to denote, first of all, an event. So we will denote the event by, as we already denoted by E and F. So you can denote now by A. Let A denotes the event. Which event? Yes? Yes. Denotes the event of getting a red face card. A red face card. A red face card. अब देखो यहाँ पे मैंने ई से डिनोट किया कि हमको रेड फेस कार्ड मिले. अब देखो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स आर देयर? They are total in 6 because there are 3 face cards from heart and 3 face cards from diamond. So you can write number of, in this way, number of outcomes, number of outcomes favorable to A, that equals to 6. कितने हैं? टोटल ये 6 है. कितने हैं? 6. नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए. दे आर 6 इन नंबर. दे आर 6 इन नंबर. सो यू कैन राइट number of outcomes favorable to A, that is equal to 6. Now look here. Therefore probability of A means probability of getting a red face card, that equal to 6 divided by 52. Now we can divide this further. So you can write 2 3s 6. Or you can take this 2 2s 4, 2 6 12. Whether you get this? Further you can divide this. Not. 3 divided by 26. This final answer for this. Whether you get this 2 3 6, 2 2s 4, 2 6 12. Further you cannot divide this because here when you further you cannot divide this. Whether you divide this further? No, you cannot divide this further. This final answer for this, that is probability of getting this red face card equal to 3 divided by 26. 3 divided by 26. Fourth part. Find the probability of getting the jack of hearts. As you know that jack of hearts. How many jack are there in hearts? Only one jack. There is only one jack. So you can first of all denote the event by, as we denoted already, by E, by F, by A. So you can denote E1. So we can denote. You can denote. Let E1 denotes the event. Let E1 denotes the event. Denotes the event. Which event? Event of getting a jack of heart. So you can take here this E1. I name this as E1, event E1. So how many outcomes are favorable to this E1? As you know, there is only one jack. In heart there is only one jack. So you can take number of outcomes favorable to E1. That equals to what? How many are there? 1. Therefore probability of E1 equals to probability of getting a jack of hearts, that equals to number of cases favorable to this event divided by total number of possible outcomes. That's 1 divided by 52. This is the required probability. Okay.
फिफ्थ पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड। आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए अगर हम ये कार्ड जो हम ड्रा कर रहे हैं ये स्पेड में से होगा। किस में से? यानी कि ये स्पेड होगा, ये कार्ड जो होगा ये स्पेड कार्ड होगा। अब इवन से तो हमने डिनोट किया इवेंट, अब हम E2 से डिनोट करेंगे इवेंट। किससे? E2 से। लेट यू कैन राइट E2 denotes the event, denotes the event of getting which card? Getting a spade card, or getting a spade. You can take card also, no spade card. अब E2 जो है ये डिनोट कर रहा है इवेंट को, आप गेटिंग ए स्पेड कार्ड। आप देखो कितने कार्ड है इस स्पेड की? 13 कार्ड। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस E2 कितने इसके फेवर में है? दे आर 13 इन नंबर। हाउ मेनी आर देयर? 13। सो यू कैन टेक नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि कितने आउटकम है फेवरेबल टू E2, favorable to E2. They are how many in number? 13. Therefore, probability of E2, which means that probability of getting a spade card, that equal to 13 divided by 52. Whether we cancel out this? 13? Yes, that is also 13. 1 is 13, 4 is. That equals to 1 by 4. Also these are 4 sweets. This is divided into 4 parts. So each card contains 13. Each sweet contains 13 cards. So you can divide this. 13 1 is 13 4 is. That means probability of getting a spade card that equals to 1 by 4. 1/4 चांस है, 1/4 चांस कि हमको कौन सा कार्ड मिले? स्पेड कार्ड मिले, स्पेड कार्ड। सिक्स्थ पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड निकलेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्वीन ऑफ डायमंड्स होगा, क्वीन ऑफ डायमंड्स होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले E2 से हमने इवेंट को डिनोट किया, अब हम E3 से डिनोट करेंगे। किससे? लेट E3 denotes the event, of getting which card? A queen of diamonds. Queen of diamonds. So I denote this event, that event of getting this queen of diamonds by E3. How many? Look here. When you look at in diamonds, there is only one queen. How many queens are? Only one queen. There is only one queen. So number of outcomes favorable to E3. How many are they? So you can take number of outcomes favorable to E3. To E3, that equals to what? 1. That equals to 1. Therefore, probability of E3. That probability equals to what? That probability equals to 1 divided by 52. यानी कि number of outcomes favorable to E3 divided by total number of possible outcomes. Whether you get this total, as we know that total number of possible outcomes here equals to 52. In this way, we completed this question number 14.